Hello class. Today we are going to discuss a new chapter in science, the chapter number 11, and the chapter name is chemical effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट पर जो केमिकल इफेक्ट होता है वो किस तरीके से होता है, आगे देखते हैं. इंट्रोडक्शन. हैव यू एवर हर्ड योर एल्डर्स वार्निंग यू टू not to touch electrical appliance with wet hands? Do you know why do they say so? ऐसा लगता है कि आपको वो लोग आपसे मना क्यों करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल वायर को टच ना करें? इट बिकॉज इट कैन बी डेंजरस. डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस वार्निंग? इस रीजन के पीछे क्या, इस वार्निंग के पीछे क्या रीजन होगा? वी नो दैट some materials let electricity pass through them easily. These materials are called good conductor of electricity. Other material do not allow electricity to pass through them easily. We call them poor conductor of electricity. Do liquids conduct electricity? To find out if a liquid can conduct electricity, we can use a tester having a small battery to give more power to the tester. इसके बाद है आगे, टेस्टर से अपन चेक कर सकते हैं. ठीक है. Why doesn't the bulb always glow? Sometimes even if a liquid conduct electricity, the bulb might not glow. This happen if the electric current is too weak. इलेक्ट्रिक करंट जब बहुत वीक होगा तब ये वर्क नहीं करता है. डू यू रिमेंबर why a bulb glows when electricity flow through it? बल्ब क्यों ग्लो करता है? इट्स बिकॉज द फिलामेंट इनसाइड द बल्ब गेट्स हॉट ड्यू टू द करंट मेकिंग द लाइट अप. इफ द करंट इज नॉट स्ट्रांग द फिलामेंट वुड नॉट गेट हॉट इनफ टू ग्लो. फिलामेंट की वजह से बल्ब ग्लो करता है. मेकिंग अ टेस्टर टू डिटेक्ट अ वीक करंट. To detect even weak electric current, we can use another effect of electric current. For example, its magnetic effect. Do you remember what happens to compass needle when electric current flows nearby? Even if there is a very minor current, it can cause the compass needle to move. We can use this idea to create another type of tester. Let's find out how we can make a tester that uses the magnetic effect of electric current in our next activity. Using an LED in tester, you can use an LED light emitting diode instead of filament bulb in your electric tester. And LED is greater choice because it glows even when the electric current flowing through it's weak. ठीक है. उसमें एक फिलामेंट लगा होता है टेस्टर में. अगर इलेक्ट्रिक करंट वीक है तो वो डिम वर्क करेगा और अगर हाई है तो वो प्रॉपरली ग्लो करेगा. इसके बाद आगे है chemical effect of electric current. An electric current can produce different effects such as heat, light and magnetic effect. But what happens when an electric current flows through a liquid? When a liquid current passes through a liquid called a conducting solution, it can cause several things to happen. Gas bubble may form at the electrodes. Metal deposit might appear on the electrodes. Color change may be seen in the solution. The change depend on the type of liquid and electrode used. जो ये चेंज होता है किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड और इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं. दिस इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट. दिस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या कहलाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Have you ever noticed a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims, but if they get scratched, that shiny layer comes off, showing a dull metal surface underneath? Or maybe you have seen jewelry that looks like it's made of gold, but after using it for sometimes the gold layer wears off, revealing a different metal inside.
In both case, what you see in thin layer of one metal on top of another metal. This process of coating one metal with another is called electroplating. ठीक है, आगे है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अपन प्रोसेस समझते हैं. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 का सोल्यूशन होगा, उससे करंट अगर पास करता है तो it causes the copper sulfate to break down into copper and sulfate ions. The free copper ions move towards the negative electrodes called the cathode and get deposit there as a thin layer. But you might wonder what happens to the copper sulfate solution when some of its copper is used up. Well, the positive electrode called the anode is made of copper and it slowly dissolves into the solution. Adding more copper ion back into the liquids, this keep the copper supply in the solution balance, so the process can go on continuously. ये था पहली का एक्सपेरिमेंट. उसने भी कुछ इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया है, रीड करेंगे आप. ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है. रियल लाइफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रियल लाइफ में क्या क्या यूजेस है, तो किस किस में यूज हो सकती है? ज्वेलरी में, किचन यूटेंसिल्स में, कार पार्ट्स में. ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूजफुल एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक क्या है? यूजफुल एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ अ desired metal is deposited onto the surface of another material using the flow of electric current. This technique is a practical application of the chemical effect of electric current and is widely used to various industries for enhancing the properties of मेटल ऑब्जेक्ट. ये मेटल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने में यूजफुल होती है. हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज प्लेस्ड इन सोल्यूशन कंटेनिंग द मेटल दैट विल बी डिपॉजिटेड. when the electric current passes through the solution, metal ions are attracted to the object and form a thin even layer on its surface. This layer can improve the appearance, durability and resistance to corrosion of the object. ये ऑब्जेक्ट के corrosion को रोकता है. बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसके क्या क्या बेनिफिट है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज an essential process of manufacturing and production because it allows object to have a thin coating of a metal that has desirable properties. For example, chromium plate, gold and silver plate, tin plate, जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन. ठीक है. इसके बाद है एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड सेफ्टी कंसर्न. while electroplating is a valuable process in industry, it also environmental concern. The chemical solution used during electroplating can be toxic and hazardous to the environment. ये जो होगा वो hazardous होगा if not disposed of properly. जब भी अगर अच्छे से डिस्पोज नहीं होगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा देगा. फैक्ट्रीज दैट परफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट डिस्पोजल गाइडलाइंस टू मैनेज दिस वेस्ट रिस्पॉन्सिबली. Proper treatment and disposal of the used conducting solution are essential to prevent water and soil pollution and to protect the ecosystem. Electroplating remains one of the most significant and practical application of the chemical effect of electric current, helping to create more durable, attractive and cost-effective product across a wide range of industry. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपन को इस तरीके से बेनिफिशियल होता है. इसके बाद आता है चैप्टर की टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टर्स, material which allows electric current to flow through them. Electricity, the movement of charge
the movement of charges through a body. Electric current, the flow of electric charge. Electrolyte, the liquid which conducts electricity and undergoes decomposition. Electrolysis, the process of decomposition of an electrolyte solution into ions on passing an electric current through it. Insulator, material which do not allow electric current to flow through them. Insulator allow नहीं करता ion and atom or molecule with an electric charge created by losing or gaining one or more electrons. Ion for helping gaining one or more electrons. अब है चैप्टर रिकैप. चैप्टर रिकैप का फर्स्ट पॉइंट है सम लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली वाइल अदर्स डू नॉट. कुछ लिक्विड होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास थ्रू करने के लिए. लिक्विड दैट आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफन सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड बेस एंड salts. When an electric current flows through a liquid that conducts electricity, it can trigger chemical reaction in that liquid. These reactions are known as the chemical effect of electric current. Electroplating is a process in which a thin layer of specific metal is coated onto the surface of another material using electricity. Next है चैप्टर का असाइनमेंट. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used to test the conductivity of a liquid. तो इसका आंसर होगा टेस्टर. The electrode used in testing the conductivity of liquid are usually made of graphite. Next है pure water is a poor conductor of electricity. Which of the following liquid is good conductor of electricity? Is lemon juice. In electroplating, the object to be plated is connected to the negative terminal to the battery. Negative terminal of the battery. The process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called electroplating. Fill in the blanks. First है a liquid that conduct electricity is called an electrolyte. Next है the metal rod used to pass current through a liquid are called electrodes. Dash is a process where electricity is used to deposit a layer of one metal onto another. Electroplating. Pure water is dash conductor of electricity but tap water is dash conductor. तो ये होगा poor और ये होगा good. In a tester, the dash lights up when the tested substance conducts electricity. तो होगा बल्ब और एलईडी. True and false. All liquid conduct electricity equally well. False. The brightness of the LED in a tester indicates how good a conductor the tested liquid is.
ट्रू। Electroplating can be used to give a metallic coating on non-metallic object. True. The chemical effect of electric current is only observed in liquid, never in solid. False. Lemon juice is a better conductor of electricity than distilled water. True. इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव रीजन, थॉट्स, लाइफ स्किल, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन। इसके साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड बाय।